Okay. Uh, Last time in the last lecture, we talked about chapter number 5, which was formulating research design. And we discussed different research choices, research strategies, time horizons, and we discussed this research onion, which was basically about data collection, different strategies, approaches, philosophies, choices, time horizons, techniques, and procedures which affect the data collection, right? So we've talked about different research approaches. In the last lecture, we talked about experimental research, classification of different research purposes, which is exploratory, descriptive, and explanatory. And then we discussed research strategies. And the first of the research strategies is experiment, right? We had a discussion about experiment, and we discussed in experiment, basically there are two main groups. One is a control group, the other is experiment group. We take a dependent variable and we measure it before the experiment, and then we introduce the intervention, keeping all other variables constant, right? Or in other words, we control all other variables, right? And then we measure results after the intervention has taken place, and then we see the difference and we attribute it to the intervention, right? This was a simple model of a classic experimental design, right? Today we're going to talk about survey research, which is popular in business research. Survey research is one of the most popular research strategy or data collection strategy in the business research or in the social sciences, right? So the benefit of survey is that we can collect a large amount of data. We can collect data from like maybe thousands of people. And, you know, there are some researches where we really need to collect opinion of a large number of people. For example, we want to know whether an advertisement has an impact on target population or not. So we might decide to collect data from hundreds or thousands of people to evaluate the efficacy of our advertisement, right? So in certain cases, survey research is the only suitable method, right? Because we can approach a large number of people. At the same time, it also allows collection of quantitative data. You know, sometimes we need quantitative data because we want to analyze data in a more meaningful way and extract results from the quantitative data. It is difficult to analyze the qualitative data. So that's why in order to use the inferential statistics and other statistical techniques, we need quantitative data, and survey research, the data collected through survey research, can be used for quantitative data analysis, right? So sample needs to be representative, of course. One of the most important thing is that in the survey research is that, you know, we cannot approach the whole population. We cannot collect data from like 2 million person who are the target population. So we only collect data from a sample. Survey research is only effective when the data collected from the sample is representative of the whole population, right? So if the data collected is not representative of the whole population, then we might not get the accurate results. In other words, when we talk about data collection through survey research, if the data we collect, if we choose a wrong sample, simply the results we would get would not represent the
the overall population, right? So that is why it is important that the survey that the sample we choose is representative of the population, right? Now, there are some problems associated with survey research. As I said, it is one of the most used research data collection forms. However, there are a number of problems, and one of the problem is that data collected through survey is prone to a number of errors, number of biases. For example, uh, you are asking somebody to fill your survey when somebody is very busy, so he might not be ready to give appropriate amount of time to fill your survey, right? And that is why the respondent fills it very quickly, which might not be very accurate, right? At the same time, sometimes when we are collecting data, we are tired. We want to take collect as much data as possible within short span of time. So there are sometimes we are in rush, and that's why we do not approach the right sample, right? Similarly, survey research may also be problematic if the questionnaire is not properly designed. We'll discuss more about this in the coming chapters. We have a full-fledged chapter on this, but at the moment, I just want to tell you that survey research, if the survey questionnaire is not appropriately designed, if it is too long, if it is too short, if it is too difficult, if it is not appropriately customized according to the culture of the country, then it might have problems. Sometimes students, they make very long questionnaires just in a desire to collect more and more data, and that is very problematic, right? We'll discuss more about this. Then we also, the next, the other form of survey data collection may include, other than the questionnaire, may also include structured observation and structured interviews. They can also be used as in the survey technique, right? The next research strategy we are going to use is the case study method, right? Now, case study method is basically a form of data collection in which we try to get data we try to capture the real world situation, right? We want to collect data from an organization, and we want to analyze the organization in detail, in depth, right? So case study, that's why is very popular in qualitatives, especially in some qualitative, when we are conducting a qualitative studies, case study may be a popular choice, right? One of the problem with the case study is that case study may not, you cannot collect data from so many different cases, right? So there are problems of generalizability. Why do we do research? We do research because we want to replicate research on other organizations. The findings collected from one organization are reported in such a way that those findings can be applied on similar organization in similar situations, right? So that is why case study is problematic in this sense, that case study might not allow us to collect data from large number of organizations, right? So
then comes one of the problem with the case studies. Another problem with the case study is the case study. It is very important for researcher to very carefully choose the case. You know, we only choose a case if it is really important case, right? The case study itself tells us that the case is so important that it needs a study. Now, as I said, however, the benefit of the case study is that the case study does provide in-depth knowledge about an organization, right? Now, case study can be of different types. We can have a single organization case study, right? Or we can study multiple organizations in the case study, right? In case study, we can use both qualitative and quantitative data. So basically, we are studying one organization. We may collect some qualitative data. We may conduct interviews within the organization. We may also get some documents, some records, some like sales record, right? And we may also, collect some information through survey. So we can use multiple techniques of data collection in the case study methods, right? So case study, there can be different types of case studies, single versus multiple cases. So one way is to collect data to focus on one single organization, right? And in that case, since we are collecting data from one single organization, our focus remain on one organization and we try to find out almost everything about that organization, or we really want to dig deep into the organization, right? At the same time, we can also conduct a research having multiple cases, right? Multiple cases, we only go for the multiple cases when we know that the cases we've got, they are similar. We collect, for example, we choose 5 or 6 organizations and we realize that all those organizations, they are similar, and that is why it is meaningful to collect data from all these organizations, because the results would be similar and there would be more generalizability compared with the single case study, right? So in other words, we may be able to, if we collect data from multiple cases, the replication of the findings is possible, right? Then the second dimension is holistic versus embedded. Holistic versus embedded case studies, right? So holistic versus embedded. So case study, holistic case study is the case study when we take the whole organization as one unit. The level of unit of analysis is one organization. However, we all know that sometimes within an organization, there are subunits. Subunits, for example, departments, divisions, different type of teams, right? So if we take those teams, those departments, those divisions as separate units, right? And organization as a whole as separate unit. So we might be analyzing data at different unit of analysis, right? So that is called embedded case study, right? Then comes action research. So action research, as the words action tells you that this is about action. So what sort of action? One of the major
criticism on research, survey research, or other methods of research by practitioners is that these survey methods or these research methods, they ask employees whether they are satisfied or not. I mean, at one point in time, they might be satisfied, they might not be satisfied. But they do not want to know the reasons, they do not want to know what has to be changed if we want to convert the dissatisfied employees into satisfied employees, right? अगर आप ये समझे कि कुछ employees ऐसे हैं कि जो बड़े अगर ये पता भी चल जाता सर्वे से कि वो employees are very dissatisfied, and this dissatisfaction is linked with the supervisory support, lack of supervisory support, right? Still, you know, the research does not offer a solution. So that is why, you know, a new technique, which is action research. Action research was proposed by certain researchers, and that is basically, normally these sort of studies, action researches, they are conducted by consultants, those who are closely working with the organizations. They conduct these sort of researches. So what do they do in the action research? They plan action, they implement action, and they evaluate action. Right? What does that mean? That means that they go to the organization, start working there as a consultant or as an advisor. They plan what sort of change is required, what sort of action is to be taken. Once the action is determined, right, that is implemented in the organization. So if you look at that, this spiral, you would see first they go and analyze the context and the purpose of research. And then they diagnose what is the problem. So this research, action research, is very much embedded in the practice. They diagnose, they go to the organization, they diagnose what's going on, or what are the key issues there, what are the key problems there, and then they plan. As I said, planning action, taking action, evaluating action. So they plan what to do. For example, they decide to, based on that, they plan that they need to make certain changes, and they introduce an intervention. And that intervention is implemented. So they take action. And then once the action is taken, for example, what can be an action? You realize that employees are very dissatisfied, right? And the reason you find out is that employees are dissatisfied because they feel that the boss is not fair. Boss is, is giving favors to some people, right? So you plan an action, take the bosses in confidence, tell them to behave differently. So these are the, for example, different actions, and then reevaluate after some time whether there is any improvement in the employee satisfaction or not, right? So action research is planning, diagnosing, planning action, taking action, and then evaluating. But then this does not stop here. अब आपको पता चला है कि जनाब कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन बढ़ी है, लेकिन मुकम्मल तौर पे एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ी, right? So that means there are other things that needs to be diagnosed, that needs to be found out, right? So what you diagnose, you go for another round, diagnose the issues, again you start planning how to change this, how to improve this situation. Take action means implement those solutions, then evaluate again, and then it goes on again diagnose, and this goes on and on. So that means you keep on doing this research, you keep on diagnosing problems, and then planning, taking actions, evaluating, and in this process you document each and everything, and the research findings are based on your observation or the documentation you make during a research process.
Yeah, so interesting, isn't it? So in this case, researcher becomes part of the organization because researcher has to introduce changes or interventions, right? Promote change within the organization and can have two distinct foci: the aim of the research and the need of the sponsor. So one of the problem with the action research is sometimes you have different research objectives, but your sponsor is not interested in that. Your sponsor is interested in something else. So sometimes there's conflict because you have two foci. There's not one focus, right? Two distinct foci. One is the client requirement, the other are your research interests. So you have to, one of the challenge for the researcher is that you have to balance these challenges, right? Uh, so um, another problem with action research is that it requires high level of expertise. You know, as you can see, that since the researcher is involved in a guiding role to the organization is not going to trust everybody. They would only trust somebody who's an expert, who's a, you know, who knows really more than the managers working in the organization. Only then they would allow. So one of the problem with action research is that it is not possible for everyone to do action research, right? At the same time, action research is also problematic in the sense that you need very high level of close cooperation, coordination, and trust of the organization, because you have to make changes and you have to make then you have to evaluate changes, and then you are going to make those changes. You are going to translate those evaluations into your research finding. So organization has to be on board, because sometimes organizations, they are conscious that if you publish a research, that might leak their company secrets, right? So not many organizations are ready to this kind of research, right? So then comes the next one is grounded theory. What is grounded theory? So far, what we have seen: survey research, experimentation. What we do in the survey, we have hypotheses. We already have a theory. Out of theory, we deduce hypotheses, right? You know, we talked about deductive approaches, right? So in which we extract hypotheses from the theory, and then from the hypothesis, based on hypothesis, we make a questionnaire, we float a questionnaire, collect data, and then we analyze the finding, right? However, in the grounded theory, the process is totally different. Grounded theory uses a generally inductive approach, right? Inductive approach. So the purpose of, you know, the grounded theory is basically meant to analyze the data patterns. So we keep an eye on the data, we observe different things, we conduct different interviews. So the data is basically, data comes first, and based on data, using inductive approach, we try to predict behavior, we try to develop theory from data generated by observations, right? So grounded theory, as I said, it is unlike the survey research. It uses inductive approach, right? And
since it uses inductive approach, it's from data to theory, not from theory to data, right? So in the grounded theory, so it is basically response to extreme positivism. Positivistic ideology, which is, you know, which assumes that reality exists, right? And reality exists outside the research setting, right? There's a pre-existing reality. We only have to collect it. Grounded theory recognize that reality might be, you know, might be constructed, right? We'll discuss this concept, you know, social construction in the coming chapters. So grounded theory basically is used to develop theoretical explanation of social interactions and process in a wide range of contexts. Business और मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा होती है. यानी आपने जब ये कह दिया कि एक सिचुएशन ये है कि आपने ये पता कर लिया कि ये फैक्टर्स जो हैं दे इन्फ्लुएंस द जॉब कमिटमेंट, I mean it does not tell you the whole story. आप ग्राउंडेड थ्योरी में आप क्या करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, उनके बिहेवियर्स देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बेसिस पे एक सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए हम क्वालिटेटिव डेटा एनालाइज करते हैं. उस क्वालिटेटिव डेटा से हम एक थ्योरी जनरेशन की तरफ जाते हैं, थ्योरी व्हिच इज ग्राउंडेड इन डेटा, राइट? Grounded theory, as I said, mainly use qualitative data, right? Now, जैसे हम क्वांटिटेटिव स्टडीज में बेसिकली दो से ज्यादा वेरिएबल्स का कोरिलेशन फाइंड करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडीज में हम स्टैटिस्टिकल सेंस में कोरिलेशन या रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. बट स्टिल समटाइम्स देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज. हम जब ग्राउंडेड थ्योरी या क्वालिटेटिव डेटा में जाते हैं, वी रीऑर्गेनाइज द डेटा इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज. कोई आपने किसी से, लेट्स से अगर इंटरव्यूज फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे इंटरव्यूज कलेक्ट किए हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप उनमें से इंटरव्यूज में से देखें कि लोगों ने जो रिस्पॉन्सेज दिए उनमें से मेजर कैटेगरीज क्या बनती, ठीक है? उसको हम कहते हैं ओपन कोडिंग. उसे हम कोड करते हैं कि जी ये जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें एक ये है कि डिससेटिस्फैक्शन, बॉस नहीं अच्छा, ठीक है? दूसरी जो है डिससेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से, तीसरी है मेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरा हामद अच्छा नहीं है, ठीक है? Because of that, I have low life satisfaction, and that is why I have low job satisfaction as well, right? So, इसको हम different categories में बना देते हैं. इसको हम कहते हैं open coding, right? इसी तरह जब हम different categories का relationship की बात करते हैं, ठीक है? That is called axial, AXIAL, axial coding, right? और तीसरी category coding की है कि integration of different categories to produce a theory, that is called selective coding, right? So we are not going into the details of the coding. If anybody is interested in doing qualitative research, I can give more help, you know, I can extend help on these coding techniques, right? So basically what we summarize here, the grounded theory is mainly collecting qualitative data, coding it in a systematic way, and you know, then generating a theory out of the data, right? Out of the qualitative data. Normally, I repeat, qualitative studies and grounded theory methodology uses inductive approach, right? The problem with this technique, grounded theory, it's very time consuming, right? Sampling is very different. We do not do sampling in the grounded theory the way we sample for a survey, right? हम इसे theoretical sampling कहते हैं कि जब तक
हम लोगों से पूछते हैं और जब एक ही बात बार बार लोग कहना शुरू हो जाए तो उसका मतलब हम कहते हैं हम थियोरेटिकल सैचुरेशन पे पहुंच गए, हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे सेम बातें रिपीट हो रही हैं और अब ये वक्त आ गया है कि अब मजीद किसी से इंटरव्यू ना किया जाए. सो अनलाइक क्वांटिटेटिव स्टडीज where we pre-decide how much is our sample, right? Or we select a sample through random sampling or other sampling techniques from a list. The sampling in qualitative studies or in grounded theory strategy is different, and we go for theoretical sampling, and which continues until theoretical saturation is reached, right? Um, okay, then let's move on. ये मैंने आपको बताया कि बड़ी इंटेंसिव है, ये आसान नहीं होता ग्राउंडेड थ्योरी पे काम करना. डेटा कलेक्शन, इवन आप अगर एक इंटरव्यू को आपने ट्रांसक्राइब करना है, उसे लिखना है, जो लोगों ने कहा है उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या फिर उसको दोबारा आपने वो जो लोगों ने कहा उनकी यानी लफ्ज़ों में लिखना है अपने कंप्यूटर पे. तो नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं. नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन 1 hour ट्रांसक्रिप्शन may take 4 to 6 hours, right? So it's very time consuming. Then comes ethnography. Ethnography is basically a type of research where the researcher himself becomes part of the research as an observer. एक्शन रिसर्च में और इसमें फ़र्क यह है कि एक्शन रिसर्च में वो कंसल्टेंट के तौर पे इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करवाता है, राइट? उसको मेजर करता है. एथनोग्राफी में आप कुछ नई चीज़ नहीं कर, आपको इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाते. Here your role is more of an observer. The aim of this research is to describe and explain social world inhabited by research. So researcher lives in that social research settings, right? For an extended period of time, he or she keeps observing what's going on. You know, sometimes people themselves do not, they are not able to tell what's going on with them. It's only a careful researcher or careful observer can observe what is going on. I want to give you an example. One of the famous management theorists, Chester Barnard. Chester Barnard was a university dropout. बैचलर अंडरग्रेड में उसे ड्रॉप कर दिया गया और उसने जाके कोल माइंस में काम करना शुरू कर दिया. और कोल माइंस में उसने ये स्टडी किया कि लोग आपस में, मजदूर आपस में कैसे कोऑपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट के साथ कैसे कोऑपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट एक कोऑपरेटिव जो डायमेंशंस हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और उस पर फिर उसने अपनी बुक्स लिखी उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे. उन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो बुक्स लिखी उस पे अमेरिका में ही वाज अवॉर्डेड 7 ऑनररी डॉक्टरेट्स. 7 यूनिवर्सिटीज ने उसे पीएचडी डिग्री ऑनररी दी उस काम पे जो उसने उनके दरमियान रहते हुए किया, और वो बंदा था जिसे अंडरग्रेड में ड्रॉप कर दिया गया था. ठीक है. सो ethnography is a kind of research in which researcher becomes part of. For example, आप कहते हैं कि मैंने ना चोरों पे रिसर्च करनी है कि क्या चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है कि चोरी करें. अब आप उनसे पूछेंगे कि जनाब बताएं कि चोर साहब क्या चीज़ आपको मोटिवेट, वो यही आपको बताएगा कि यार पहले कि जनाब यानी ज़रूरतें होती हैं इसलिए चोरी करते हैं. लेकिन जब आप अगर उनके दरमियान में रहें, गैंग्स के दरमियान रहें, चोरों के दरमियान रहें, आप उनकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करें, आपको पता चलता है कि ये क्या उनकी डिफरेंट डायमेंशन पता चलती है और बड़ा रिच डेटा आपको मिलता है. ये इसको हम कहते हैं एथनोग्राफिक स्टडीज, राइट? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में आप उसे देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल
ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में आप एम्प्लॉय से बहुत सारी चीज़ें पूछें, वो बड़ा मुख्तसर से आपको बता देंगे। जब आप रहते हैं वहाँ पे, आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, आप डिफरेंट एक रिसर्चर के एंगल से चीज़ों को देखते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उनके पीछे मोटिव क्या है। एक बंदा छोड़ के जा रहा है, वो उसकी वजह यह है कि उसका बॉस उसे डांटता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बॉस असल वजह हो। जब आप रहते हैं आपको पता चलता है कि बॉस को जो उसके बॉस ने जो ना तंग किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक नहीं है। इसलिए जब वहाँ उस सोशल सेटिंग में रहते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो अदरवाइज आप इंटरव्यू से या क्वेश्चनियर से रिस्पोंडेंट से नहीं पता कर सकते। ठीक है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है एथनोग्राफिक रिसर्च के, जिससे आप उस सोशल सेटिंग्स में जो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकें। अब आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बगैर बताए ये रिसर्च करें तो अनएथिकल। ठीक है, अगर आप बता के करें तो वो तो आपको इजाज़त नहीं देंगे कि वो कि क्यों जनाब आप इधर हमें चुप करके ऑब्जर्व करते रहें और उसके बाद जब आप ऑब्जर्व कर लें तो बाद में आप वो चीज़ें पब्लिश कर दें। सो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर रिसर्च। देखिए, रिसर्च में हमने ये भी चीज़ देखनी होती है whether we can do this research or not, right? If we cannot do this research because of access, because of any other problem, because organization does not allow us to use particular methodology, then obviously we are constrained. And that is why at the start of the lecture I said the survey is one of the most used research strategies in the field of business and management. The reason is it has less, you do not stay in the organization, organization do not fear, that their secrets would be leaked, right? Then comes archival research, right? Archival research, obviously you can see as about archives mean जो पुराने documents आपके, पुरानी books हैं, को web pages पे data पड़ा हुआ है, जो आपने Facebook से मुख्तलिफ clippings ली हैं मुख्तलिफ timings में, आपने इस basis पे research की। ठीक है, अब कई चीज़ों में आप अगर business research देखें तो बहुत सारी researches इस basis पे हो सकती हैं। archives से आप data ले सकते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब ट्विटर पे पिछले 1 सालों में क्या ट्रेंड रहे, या आप 2 महीनों तक ट्रेंड देखते हैं कि क्या रहे हैं और उसमें कितने ज़्यादा जो है ना वो आपके पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ लिंक्ड हैं वो ट्रेंड्स। या आप कहते हैं कि जनाब जो बड़े जो लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं, उनका फोकस क्या है, उनके आप ट्वीट्स देखते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए, उन ट्वीट्स को यूज़ करते हैं, उस ऑनलाइन डेटा को यूज़ करते हुए, उस वेब डेटा को यूज़ करते हुए, जर्नल से, अखबारों में क्या आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, यूजिंग ऑल दोस सॉर्ट ऑफ डेटा यू डू योर रिसर्च, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जनाब मैंने ये रिसर्च करना है कि जो है ना कोविड-19 के दौरान जब ये आया था, अल्लाह करे कि ये जल्दी जो ना we get out of this crisis situation, this pandemic, तो जब आप कहते हैं कि जनाब मैंने, आप साल बाद आप कहते हैं मैं देखना है कि कैसे कंपनीज ने किस तरह अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कैसे अपने एड्स दिए, तो आप उस केस में अगर आप जाएं भी ना, लोगों के पास पूछे भी कि 1 साल पहले आपने क्या किया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेजर्स भूल गए होते हैं। तो आप कहते हैं मैं उस वक्त के जो है ना एडवर्टीजमेंट्स देखूंगा, उस वक्त के देखूंगा कि लोगों के रिस्पांस क्या है, उस वक्त के लोगों की कंप्लेंट्स किस तरह की आई थी। इन सारे डेटा सोर्सेज की वजह से को यूज़ करते हुए आप अपने रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और रिसर्च कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्काइवल रिसर्च। So before we move on, कुछ मैं आपको ये जो methods है ना, इनमें कुछ वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स, उनकी मैं आपको कैटेगरीज ज़रा आपको बता दूं कि डिफरेंट वेरिएबल्स में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से।
क्योंकि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप हर जब भी आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च टर्मिनोलॉजीज आगे जो चैप्टर्स में यूज होंगी उनमें ये बड़ा मीनिंगफुल है। ये आपको जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं ये आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ एक डिफरेंट स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको मैं ये दिखाऊं। ये सो okay, so now you can see different variables, right? Independent variable. What is independent variable? Independent variable is a variable that is being manipulated or changed and we want to see its impact on other variables, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आप कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ सुपरवाइजर अच्छा हो तो उससे एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, या आप कहते हैं एडवर्टीजमेंट में जो जज्बाती किस्म के सीन दिखाए जाते हैं बच्चों के लिए कि माँ के जो है वो यानी या फैमिलीज के साथ कोई आपने ऐसी गैदरिंग दिखाई है एडवर्टीजमेंट में, उसका लोगों के बिहेवियर पे क्या असर होगा। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसको आप चेंज करते हैं या आप समझते हैं अगर वो चेंज हो तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाउ दैट इज गोइंग टू चेंज, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो अगर चेंज हो उसका इम्पैक्ट जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल बारिश होगी तो फसल ज्यादा होगी, तो बारिश जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फसल जो है वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप कहते हैं कि टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट ज्यादा एंगेज होंगे, तो टीचर की क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट अच्छा होगा तो ये उसकी वजह से अगर होता है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। स्टूडेंट इंटरेस्ट कैन बी डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो सिमिलरली अगर आप कहें कि जनाब आप जितना ज्यादा होंगे एंगेज कंप्यूटर में, ठीक है, उतना ज़्यादा आप जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। तो आप कहेंगे जी यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज इंडिपेंडेंट विच नेगेटिवली अफेक्ट्स द सोशल एक्टिविटीज़, राइट। सो इंडिपेंडेंट ये हो गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो जो इंडिपेंडेंट से अफेक्ट होता है, वेरिएबल दैट मे चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन अदर वेरिएबल। बारिश ज़्यादा हुई तो फसल बेहतर हुई, डिपेंडेंट वेरिएबल भी बेहतर हो गया इंडिपेंडेंट के बेहतर होने से, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व आउटकम or result from manipulation of another variable. So if there are any changes in the independent variable, we observe changes in the dependent variable. तीसरा वेरिएबल जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी मीडिएटिंग वेरिएबल, राइट। सो व्हाट इज मीडिएटिंग वेरिएबल? मीडिएटिंग वेरिएबल कई दफा ये होता है कि डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल पे डायरेक्टली असर नहीं डालता, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई और वेरिएबल चेंज होता है और उस वेरिएबल वो इन रिटर्न आगे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज है उससे लोग खुशहाल होंगे, तो बज़ाहिर तो पॉलिसी के चेंज होने से मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी के चेंज होने से एक और वेरिएबल चेंज होगा, मीडिएटिंग वेरिएबल, कि उससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगी। जॉब क्रिएशन बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो मैं खुशहाल होऊंगा। अब इस केस में कुछ मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, दरमियान में जो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल का असर दूसरे वेरिएबल डिपेंडेंट तक ले जाने के लिए दरमियान में कुछ और वेरिएबल्स हैं, उनको हम कहते हैं मीडिएटिंग वेरिएबल्स। A variable located between independent and dependent variables, right? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं
कि सुपरवाइजर बुरा है, उससे लोग जॉब छोड़ जाते हैं। भाई सुपरवाइजर बुरा होने या अच्छा होने से तो मेरा जाती कोई तल्लुक नहीं। सुपरवाइजर के बुरा होने से पहले मैं डिससेटिस्फाई होता हूँ। डिससेटिस्फाई होने के बाद मैं उसके बारे में छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब है डिससेटिस्फैक्शन जो मीडिएटिंग वेरिएबल है, जो कि सुपरवाइजर बैड सुपरविजन का इम्पैक्ट पहले डिससेटिस्फैक्शन में चेंज होता है, डिससेटिस्फैक्शन आगे फिर ट्रांसलेट होती है इनटू इंटेंशन टू लीव ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो दैट इज dissatisfaction, job dissatisfaction in this case may be a mediating variable, right? So mediating variable वो है जो दरमियान में आए आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर जो है पहले मीडिएटिंग पे जाता है, मीडिएटिंग वेरिएबल वो फिर असर आगे लेके जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, right? I hope this is clear. Then comes moderating, that is bit more complex. Moderating variable, that is the variable which moderates mean change. Mediating variable change नहीं करता, वो आप बुरा सुपरवाइजर आया तो वो कैरी करता है इम्पैक्ट जॉब डिससेटिस्फैक्शन पे, और जॉब डिससेटिस्फैक्शन से जॉब टर्नओवर इंटेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन जब मॉडरेटर है वो हम कहते हैं कि जी सुपरवाइजर तो बुरा है और उससे जॉब डिससेटिस्फैक्शन पैदा होती है, लेकिन वहाँ पे कोलीग्स बड़े अच्छे हैं, को-वर्कर सपोर्ट बहुत ज़्यादा, और वो को-वर्कर सपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के जो यानी बुरी सुपरविजन से, जहाँ पे बुरे सुपरवाइजर हों आप आमतौर पे जॉब छोड़ना चाहेंगे, लेकिन उस जगह पे क्योंकि को-वर्कर बड़े अच्छे हैं इसलिए आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते। यानी उसने नेचर ऑफ रिलेशनशिप चेंज कर दी, ठीक है? यानी आपने एक एडवर्टाइजमेंट चलाई और नहीं एडवर्टाइजमेंट की नहीं, मैं कोई और आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मॉडरेटिंग वेरिएबल इस तरह है कि आप ये कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहते हैं कि जी आपका जेंडर जो है मॉडरेटर हो सकता है। मसलन आप कहते हैं कि एक जो है ना इनिशिएटिव, अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो तो उससे एम्प्लॉय जो है प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखाएगा, इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर सपोर्ट करे। लेकिन जेंडर में मॉडरेट और आपकी पर्सनालिटी टाइप, आपकी पर्सनालिटी नहीं है, बेशक ऑर्गेनाइजेशन आपको इनकरेज करती है कि जनाब आप इनिशिएटिव लें, तो होना तो चाहिए आप सारे इनिशिएटिव लें, लेकिन आपको पता है हर बंदा इनिशिएटिव नहीं लेता, ठीक है? उसकी वजह पर्सनालिटी टाइप में मॉडरेट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इन दिस केस इज ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल एनकरेजमेंट टू टेक इनिशिएटिव, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल which in this case may be proactive behavior or innovative behavior, right? Then comes control variables, additional observable measurable variable that needs to be constant, kept constant. अब ये हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप देखने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम उन्हें मेजर कर लेते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में उसे कंट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं कि क्या इस वजह से तो नहीं कि एक बंदा है उसके घर में ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं इसलिए उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा है, तो घर में ताल्लुकात हम अच्छे या बुरे होने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उस वेरिएबल को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है? और लास्ट कैटेगरी है जी कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या हैं कि ऐसे वेरिएबल एक्सट्रेनियस बट डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व or measure variables that can potentially undermine the inferences between IV and DV need to be considered when discussing results to avoid spurious conclusion. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये कहा गया कि पता ये करना था कि जहाँ पे people go to the worship places, churches, whether they're more religious, and because they're more religious, they do not go too often to pubs and bars, to drink alcohol.
So the hypothesis was that more people would go in the churches, right? Lesser they would go to the bars. तो ये पता किया गया, ये कहा गया कि जिधर जिधर चर्च हम ये देखते हैं चर्च अटेंडेंस किन शहरों में ज्यादा है, उन शहरों में बार्स में लोग कम जाने चाहिए। अब पता ये चला जब रिसर्च के रिजल्ट्स आए कि जिस शहर में ज्यादा लोग चर्च में जाते थे, in the same city more people were going to the pubs and bars. अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके, ये आपको बता रहे हैं कि लोग चर्चेस में जाने की वजह से, जो लोग चर्च में ज्यादा जाते हैं इसलिए वो अल्कोहल पीने भी ज्यादा जाते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल उन्होंने मिस कर दी, और कंफाउंडिंग वेरिएबल था population of the city. Cities with higher population had, since they had more population, more people were going to churches and more people were going to bars and pubs as well. So that is why, you know, sometimes because we cannot control all the variables, there are some variables we ignore in our study or we cannot think of, but they have an impact on the findings. They are called confounding variables. That confounding means they disturb our research findings. So they give us spurious conclusion, wrong conclusions, right? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि conclusion ये निकाल लिया कि चर्चेस की वजह से लोग बार्स में जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था, वो population की वजह से, ठीक है? So now the next thing is we would discuss the multiple research methods, triangulation, time horizon, right? We would, yeah, I think we will stop here, and you know the rest of these things we cover in the next lecture, right? So what you can do to practice what we've learned, try to find out a survey on the internet, right? There are many surveys available. Try to fill a survey yourself, right? Participate in a survey so that you get a feel, you know, what sort of survey study, how survey studies are taking place. Also, try to find out, can you do any ethnographic study? For example, you are living in a university, you are studying in a university, and there are so many things going around. Can you systematically collect data about something, right? As an ethnographer, right? If you're working for an organization, try to find a possibility of collecting data as an, or analyzing data as an action researcher, right? So there are multiple things you can find out, right? Try to evaluate the possibility of application of these research strategies that we discussed today. Okay, so thank you. I'll you know, we'll cover that in the next clip, right? So that it's not too long, right? So we'll stop here.